Good morning, student. Today I'm teaching you social science for class 8, and now this is the revision video of your chapter 2, The Rises of the English East India Company. So the following topics we will cover in this chapter, like incoming of the Europeans, the Portuguese, the Dutch and the French, the English, rivalry, conflicts, battles, wars among these Europeans to establish themselves. The English East India Company emerged victorious. The company as a political force, administrative organization of the English force in India. So, in search of sea route towards the east, several people from the western countries like the British, French, Dutch and Portuguese started sea voyages. ठीक है, तो जब सी रूट से ईस्ट साइड से बहुत से पीपल हमारी कंट्री में आए, लाइक ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज, दे नेचुरली बिकेम रिवल्स ऑफ ईच अदर. तो ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे. सो इन दिस स्ट्रगल फॉर पावर, ब्रिटेन इमर्ज्ड विक्टोरियस एंड ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ imperialist nation that ruled India for nearly 200 years. तो ये जो ब्रिटेन था वो इन सब में विक्टोरियस हुआ, इन सब में जीता और उसने 200 ईयर्स हमारे कंट्री में रूल किया. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी was formed in 1600 with a charter from Queen Elizabeth I granting the sole right to carry trade in the east. ठीक है, तो यहाँ की जो क्वीन थी एलिजाबेथ, उसने अकेले पूरे ईस्ट इंडिया में राज किया और उसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया भी बेच करके पूरा राज करा. सो दिस मेंट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप in England could compete with the East India Company. The English established their settlement and factories at Mosul, Patnam, Patna, Dhaka. तो इन पर्टिकुलर एरियाज में उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज सेटल करी. एंड फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में, बॉम्बे एंड सुल्तानती एंड कालीकट एंड गोविंदपुर. ठीक है, तो इन पर्टिकुलर एरियाज में भी. Now Calicut and Govindpur were joined together to form a new city, Calcutta, now known as Kolkata. तो ये दोनों ही ज्वाइन, कोलकाता इनकी नई सिटी थी, अब उसको कोलकाता बोला जाता है. द फैक्ट्री एट सुल्तानती वॉज ऑल्सो फोर्टेड एंड रीनेम्ड एज फोर्ट विलियम. तो ये इसको भी उन्होंने जीता और फोर्ट विलियम उसको दोबारा से नया नाम दिया. So in 1961 the English were granted a farman by the Mughal Emperor Aurangzeb, which exempted the British company from paying custom duties in Bengal. तो 1691 में इंग्लिश वर ग्रांटेड अ फारमैन. मुगल्स एम्परर को भी उन्होंने हराया और ब्रिटिश कंपनी ने बहुत से कस्टम ड्यूटीज़ बंगाल में इम्पोज किए. सो इन 1777 another Mughal emperor Farooq Sayyid granted another farman. So this farman extended the privilege to the British in Gujarat and Deccan. अब गुजरात और डेक्कन में ये जो नया फार्मैन था, ठीक है, फारूक सैयद, इसने मौका दिया कि इंडिया के अंदर आकर के वो अपने तरीके से काम करे. So, but before the East India Company could establish itself in India, the Portuguese has already conquered Goa and started expanding their commercial and political power in the western coast of India. So, the Dutch too had started establishing their trading factories. Now the Europeans. So, Indian spices, silk, textile, indigo and salt peat or for making gunpowder were very much in demand in Europe. During the medieval period, Arab traders controlled the trade through the sea route, but when conflicts and war started between Turks and Europeans, this trade was disrupted. In order to get the Indian goods, which were much in demanded in Europe, the Western trader decided to find new sea routes in India. So the first European trader to discover a new sea route to India were the Portuguese. They were followed by the Dutch, the English and finally the French. So all of them formed trading companies. Their primary aim was to capture the profit raising markets of Asia.
Okay, so this much is about this chapter. Thank you and have a nice day.